सो दिस पर्टिकुलर वीडियो सीरीज़ ये बहुत काम की है. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सम्स है CA फाइनल AFM के लिए, जिनका आने का चांसेस बहुत हाई है. और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि इसमें मैंने टाइम ज़्यादा स्पेंड नहीं किया है, टू द पॉइंट डिस्कशन किया है, सम्स दिखाया है, आगे बढ़ा है. और इसके साथ PDF जो है वो इस डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. इनफैक्ट आपके लिए बेस्ट क्या होगा, आप PDF का क्वेश्चंस पहले ट्राई कर लीजिए, और अगर किसी क्वेश्चन में अटेम्प्ट करते हैं तो केवल वो वाला पार्ट देखिए. तो उस केस में क्या होगा कि आपको हो सकता है ये जैसे 50 मिनट्स का वीडियो है सपोज, तो आपको केवल 5 मिनट में पूरा फायदा हो जा रहा है 10 क्वेश्चंस का. एंड यू नो CA फाइनल AFM इज ऑल अबाउट सम्स. तो 2-5 मिनट में यू आर एबल टू कवर 10 सम्स स्ट्रेट अवे. डोंट इग्नोर दिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू पास. Yeah, question number 7. So for the sake of convenience, I will read question number 7. 7 and 21 are same. 21 is perfectly designed, it is there in our mat. And question number 7 came recently, which is not perfectly designed. KGF Bank's Sydney branch had surplus funds of $7 lakh. So it's a Sydney bank, Australian bank. But surplus is in dollar terms, 7 lakh. For a period of 2 months. Cost of funds to the bank is 6% per annum. Cost of funds to the bank is 6% per annum. So what is the amount to be paid after 2 months? 7 lakh plus 6% of 7 lakh into 2 by 12. Please find out. 7 lakh plus 2% of 6% of 7 lakh into 2 by 12. 7 lakh plus 6% of 7 lakh into 2 by 12. Okay, the interest part is coming to 7,000. 7,000 US dollar. So then it's 7 lakh 7,000 US dollar that we have to repay. Remember? So the Sydney Bank has to repay 7 lakh 7,000 US dollar. Okay? It is a deposit from somebody, the 7 lakh dollar. So 7 lakh 7,000 has to be paid. I don't know, some people are saying 1, 2, 3, 6, 6, 6. And others are saying 7,000. Can we just calculate please? It's 2 months, not 3 months. 6% of 7 lakh is like 42,000. 42,000 into 2 by 12, 1/6. 7,000. It's exactly 7,000. I don't know how people are saying 1, 2, 3, 6, 6, 7. That's totally wrong. So it's 7,000 plus 7 lakh. 7 lakh 7,000. Okay. They propose to invest the funds in Sydney, that is Australia, New York, that is US, or Tokyo, and obtain the best yield without any exchange risk to the bank. Following rates of interest are available at the 3 centers. So you can see the best rate is there in New York, 8%. Then Sydney 7.5%, then Tokyo 4%. The market rate in Australia for US dollar and yen are as under. So we have Sydney on New York, we have Sydney on Tokyo. I've always told you, whether it's Sydney on New York or New York on Sydney, that does not tell me something about the base currency. I have to apply my common sense. So I know that Japan, that is yen, is a very very weak currency. Yen का कोई औकात नहीं है. It's a very weak currency. So when we have Sydney on Tokyo, I'm looking at Sydney on Tokyo, and I find the rate is 79 point something. The rate cannot be of yen. Sydney on Tokyo, and I find the rate is 79 point something. The rate cannot be of yen. So I understood the base currency is Australian dollar. So the second rate is yen per Australian dollar. So the first rate is dollar per Australian dollar. I hope it's fine. I understood from the second rate that it's yen per Australian dollar. So the first rate is dollar per Australian dollar. Perfect. So Australian dollar is the base currency. Australian dollar is the base currency. Okay. Which rate is illogically given, not required? You can guess it. Which rate is illogically given, not required? In the paper, when you get the illogical thing not required should be cancelled by pencil, so that your mind doesn't go over there and by mistake you don't use that number. You don't know what happens in the exam. In stress, everybody can make a mistake. So which rate is illogically given? The 1 month rate. The 1 month rate is illogically given. If I were taking the paper, I would have crossed it. And also, what you have understood, that the first rate is dollar per Australian dollar, the second rate is yen per dollar. That should also be written in the paper itself, in the exam hall. Okay? Perfect. And also see that the swap points for yen per Australian dollar are high-low. So they would be deducted. In the rhythm, you may add it, they would be deducted. While the dollar per Australian dollar swap points are low-high, they would be added.
small things. At which center will the investment be made, and what will be the net gain to the bank on the invested funds? I will not be able to open question number 21. You can check it later. If you will check the last line in that question number 21, I don't remember the exact words, but it was net gain in pound terms. Net gain in pound terms. Net gain in pound terms. Because it was a UK bank over there. Here it should be net gain in Australian dollar terms. Net gain in Australian dollar terms. So I will solve the sum in Australian dollar terms. If I am a good student, I have done the sum in class, I am prepared. When the sum comes in the exam, I understand, okay, somebody has just edited the sum, changed the name, changed the rates and given the sum. Okay, so accordingly, we'll find out the answer in Australian dollar. Somebody's helping me outside, so written nearest pound in the 21 sum. So nearest pound means we don't have to go into decimal places when amounts are involved. Of course, when exchange rates are involved, we will use 4 decimal places because 4 decimal places given the sum. Okay, but when amounts are involved, we will round them off. We will not go to decimal places. Fine? Yes, let's proceed. So what we find is, if we invest in New York, that's the easier one. New York. Let's have a look, please. If you invest in New York, you're investing in dollars, you already have dollars. So in that case, 8% is the return you're going to earn and 6% is the cost of fund. 8 minus 6 is what? 2. 8 minus 6 is 2. Can you please calculate 2% of 7 lakh into 2 by 12? Can you please calculate 2% of 7 lakh into 2 by 12? I have done 8 minus 6, that is 2%. 2% of 7 lakh into 2 by 12. I'm doing the second one, investment in New York, because that's really enticing. 8 minus 6, 2% of 7 lakh into 2 by 12. Okay, so we are getting $2,333. $2,333. But I want to get the answer in Australian dollars. So $2,333 will be sold to get Australian dollars. So we need to sell dollars and buy Australian dollar. Australian dollar is the base currency. Australian dollar is the base currency. So we have to buy Australian dollar. So the rate will be 0.7300 plus 0.0030. 0.7300 plus 0.0030. So it's 0.7330. 0.7330. Are you okay? 0.7330. 0.7300 plus 0.0030 is 0.7330. 0.7330 shall be the rate. So 0.7330. So you all got $2,333. That divided by 0.7330. $2,333 divided by 0.7330. 2,333.33 whatever divided by 0.7330. It's coming to what? It's coming to 3183, around about 3183 Australian dollars. Let's check the answer. 3183 Australian dollars. Investment in New York, 3183 Australian dollars. Can you see this? It's 3183 Australian dollars. It's 3183 Australian dollars. Okay, they're given the answer in dollars also, Australian dollar also. I'll give the answer in Australian dollar because it's an Australian bank. Okay, so it's 3183 Australian dollars. 3183 Australian dollars. Now we come to the first part, investment in Sydney. Now if we want to invest in Sydney, we have to convert 7 lakh into Australian dollar spot. You have $7 lakh. You want to invest in Australian dollars. You have to convert $7 lakh spot. To sell $7 lakh, that is buy Australian dollar 7 lakh spot. To buy Australian dollar 7 lakh spot at 0.73. So 7 lakh divided by 0.73. 7 lakh divided by 0.73. We are doing the alternative one, investment in Sydney. So converting 7 lakh US dollar into Australian dollar. So we are buying Australian dollar spot at 0.73. 7 lakh divided by 0.73. It is 958904 approx. 958904. 958904 Australian dollar. 958904 is invested at 7.5% per annum for 2 months. 958904 is invested at 7.5% per annum for 2 months. 958904 is invested at 7.5% per annum for 2 months. So what is the total amount we get? 958,904 plus 2% of 958,904 into 2 by 12. I think the interest is coming to 11986. So if we add that up to the principal, 11986 is the interest. If we add that up, the total amount is coming to 970890. It's coming to 970890. Most people are saying 970890. 970890.
That's the best form of revision taking place for those who are really doing the active thing. 970,890 or 990. Some people are saying, I don't know, 970,890. So that is the Australian dollar you're going to get, and you want to convert into Australian dollar. So leave it that way. 970,890. That's it. Now, what we have to repay? $707,000. Hope you remember. We have to repay $707,000 US dollar. So we will buy it 2 months forward. $707,000 US dollar. We'll buy it 2 months forward. That means sell Australian dollar 2 months forward. So the rate for selling Australian dollar 2 months forward is 0.7125. Did you see it? 0.7125. So 707,000 into 0.7125. 707,000 into 0.7125. 707,000 into 0.7125. 707,000 into 0.7125. 707,000 into 0.7125 is 503738. Is 503738. I said 707,000. Oh, 707,000 divided by 707,000 divided by 0.7125. Sorry. It's divided by 707,000 divided by 0.7125 divided by, because the base currency is Australian dollar, whereas the amount 707,000 was US dollar. So it's 992,281. It's bigger amount. The outflow is bigger, 992,281. It's bigger than what we got earlier. 992,281. Okay, 992,281 is the outflow. The inflow was lower. So there is a loss. There's a loss. Okay, there is a loss. If we invest in Sydney, there's a net loss, not net gain. There's a net loss. Let's see. So they have done the same. 970,890. Then 707,000 divided by 0.7125, 992,281. They got a loss of Australian dollar 21391. Australian dollar 21391. There's no need to calculate 15,241. Australian dollar 21391 is the answer. Australian dollar 21391. We got this figure. You are all said 970,890. That was the amount invested over there for 2 months, and we got the 707,000 by 0.7125. Okay, forward buying of US dollar. So the difference is 21391. 21391. 21391. Why are we rounding off instead of keeping it in decimals? So Saloni Kedia, you're not listening at all. It was written in the question. You have to listen. Okay, in this question it was not written, in fact. Otherwise, it was written in the pound question that round off to the nearest pound. Okay, so only the exchange rates are being taken in decimals and the amounts are being taken in round figures. Anyways, when big amounts are involved, 5 lakh something, 7 lakh something, there is no sense in taking decimals. 5,28,223.27, it doesn't help. So common sense is everything when rounding off is concerned. So this is how you invest in Sydney. When you invest in Tokyo, you have to convert $7 lakh into yen. But we are not given the rate between yen and dollars. So you have to apply the cross rate. Okay. $7 lakh has to be converted into yen. So you can convert $7 lakh into Australian dollars and convert Australian dollars into yen. Right now you converted 7 lakh into Australian dollars, the spot at 0.7300. That Australian dollar you convert into yen. Okay. You are buying yen. That means you are selling Australian dollar at 79.09. So instead of cross rate, you can do what? You had already converted the $7 lakh into Australian dollar at 0.73. You got 9 lakh something. You convert that 9 lakh something at 79. Okay. And you are able to get how much yen? It's a big amount of yen because the yen is a weak currency. So big amount. So that much yen, and that much yen we will invest at the rate of 4%. I'm not doing it further. We have done it in class. It's like a double help. Okay. Look at this sum. Question number 5. Features of an OCD. Following is the data related to 9% fully convertible debentures issued by Delta at 1,000. Market price is 1,000. Now that's a coincidence that the face value and the market price are same. Okay, 9% debenture. Conversion ratio 25. So you will get 25 shares. Usually when we divide the face value by 25, we get the conversion price. And if we divide the market price by the number of shares, we get the conversion parity price. Here both will be same. Straight value, okay, that is the present value of the coupon and the redemption at the YTM on non-convertible bond in the market is 800. Okay, investment value. Market price of equity share 30. So 25 into 30 is the conversion value. N into S. You are going to get 25 shares. The share price is 30. So 750 is the conversion value. Dividend 1 rupee per share. First question, conversion value N into S. 25
into 30. Market conversion price. So market conversion price is 1000 by 25. Which 1000? The face value? No. The market price of the bond, 1000 divided by 25. That is 40. 40 is the conversion price. Market conversion price. Conversion premium per share. So how much extra are you paying for the share? You could have bought the share for 30, but you are paying 40 via the bond. So 40 minus 30, 10. What is the ratio of the conversion premium? It's 40 minus 30 by 30. That is 33.33%. Ratio of conversion premium. How much extra are you paying in percentage terms? 40 minus 30 by 30. Premium over straight value of the debenture. The price of the bond is 1000. The straight value is 800. So premium over straight value is 1000 minus 800 by 800. 1000 minus 800 by 800, which is 25%. 25%. Favorable income differential per share. So what is the income from the bond? 9% of 1000, that is 90. Okay. And 90 per share is what? 90 by 25 is what? 90 by 25 is 3.6. So 3.6 is what we are getting from the bond. But 1 rupee is what we'll get from the share. So 3.6 minus 1, 2.6 is the favorable income differential per share. What is the premium payback period? So how much extra are we paying initially? 10 rupees, 40 minus 30, 10. And we are getting every year 2.6 extra. So in how many years will we break even? 10 divided by 2.6. 10 divided by 2.6. What is it? 3.85 years. 3.85 years. Okay. So it's a very easy question. People need to be in control of it. You can practice 10 sums of this type. If you feel that you need the CA inter type, practice. There are around 15-20 sums. Practice them. Okay. I have never felt the need to practice it because it's so logical. Okay, direct. Anyways, so this is OCD. Question number 2 is on Alcar model. I once again repeat, what do they want? They want the forecasted balance sheet from you in the answer. Forecasted balance sheet, they want the statement where you have computed the cash flow, free cash flow for 3-4 years. Okay, and then the present value and all that stuff. So the presentation has to be 100% correct. So this is the income statement given. You can see there is no interest. So this 4,200 is actually no PAT. Balance sheet is given FACA, equity share capital, creditors. Company is contemplating new strategy, sales to grow at 30% for 4 years. Okay, sales. So 1, 2, 3, 4 and the 5th year extra will show. Asset turnover, net profit ratio, tax rate will remain the same. Depreciation 15% of fixed asset at the beginning. Required rate of return 15%. Evaluate the viability of the strategy. So what is the pre-strategy value? The pre-strategy value is 4,200 divided by 0.15. No PAT by KC. 4,200 by 0.15. It's coming to 28,000. 28,000. Okay, 4,200 by 0.15. 28,000. Now you have to prepare the forecasted balance sheet. Can you see fixed asset 10,000 into 1.3, 13,000 into 1.3, 16,900. Current asset 6,000 into 1.3, 7,800 and so on. Total asset. That way equity share capital 15,000 into 1.3 into 1.3. Sundry creditors into 1.3 into 1.3 total. That way you have to calculate the forecasted balance sheet. It's very simple. See, fixed asset, current asset, all 30% growth. And then you have to draw the projected cash flows the way I told you. Okay, and then the PV and all that stuff has to be done. The sum has been done in class. It's just that it's very important for the exam. So I wanted to focus on it, and therefore, since I'm feeling it will come in the exam. Question number 2 is on the Black-Scholes model. Now, Black-Scholes model is very important for the exam, and there is no teaching over here. You have to remember the formula, and more important than that, in the formula, you have to properly calculate. You should know how to calculate ln S0 by x. You should know how to calculate e to the power RT. You should know how to calculate ND1 and ND2. If you don't know these 3 things, you will never be able to solve Black-Scholes model. And it is not possible to understand how to solve Black-Scholes model by looking or by hearing somebody. Pick up your copy, pen, calculator and do it. Okay, let's look at the data. So we have the following data. Price of the stock now S0. Exercise price. Somebody calls it X, somebody calls it E. Let me call it E, capital E. So S0 80, E 75. So call is in the money. Standard deviation of the continuously compounded rate 0.4. Sigma. Maturity period 6 months. Half. 0.5 is T. And annual interest rate R is 12%. 0.12. 12%. 0.12. Somebody will put 12. It's gone. So S0, E, sigma, T and R are given. Then we are given the number of standard deviations from mean and area to the left or right one tail. This is D1 and D2 for D1 and D2. Hope you remember. If area in the left or right tail is given, we require area in the left. So accordingly, if D1 or D2 are negative, we straight away take these areas given. But if we are, if D1 or D2 are positive, in that case, we will take 1 minus the table, 1 minus the table. If D1, D2 negative, we take the table. If D1, D2 are positive, we take 1 minus table. That's because area in the left or right tail is given, we need the left. So if negative is given, left we are getting. But if positive is given, we are getting the right tail. So 1 minus that. E to the power RT is given, but T is not
e to the power rt. So e to the power 0.12 into 0.5. So e to the power 0.06 is 1.062. Very good. E to the power 0.06 is given 1.062. Otherwise, you know how to calculate. Okay, power into phone number. Power into phone number plus 1. That means 0.06 into phone number 0.0024417206 and then plus 1 into equal to 12 times. You can try please. 0.06 into 0.0024417206. I think I'm saying the correct phone number. I may be wrong. Don't charge me for that, sir. You gave a wrong phone number because you can check it in your copy. I don't use the phone number every day in my life. Okay, 0.002441. I think 7206. That is what is coming to my mind. So 0.06 into phone number plus 1 into equal to 12 times. Anyways, it's given over here. Use this 1.062. ln 1.0667. I'm sure 1.0667 is 80 by 75 because we require S0 by E ln. So 80 by 75 is 1.0667. ln of that. So ln of that is 0.0646. Okay. If it was not given, how do you calculate? I have also given you notes regarding that. Do you remember? I don't exactly remember, but I think we used to do 1.0667 square root 12 times, then minus 1 and then divide by phone number. 1.0667 square root 12 times and then minus 1 and then divide by phone number. Okay, that's how I think we get 0.0646. You can try, and even if I'm wrong, okay, don't charge me please. Okay, because I don't use all these methods. I use the Excel. Okay, so I cannot remember these shitty things over here. Anyways, so you know the formula. First, you write down the notations: S0 80, E75, sigma 0.4, T 0.5, R 0.12. Then you calculate S0 by E, 80 by 75, that is 1.0667, and then ln S0 by E is 0.0646. Then you apply the formula for D1, D1 equal to ln S0 by E plus bracket R plus sigma square by 2 into T, the whole divided by sigma root T, calculate D1. Okay, then D2 is equal to D1 minus sigma root T, calculate D2. Now D1 and D2, you need to find from this table over here, okay, doing interpolation. That suppose you get 0.32. So 0.30 is known, 0.55 is known, so 0.32 can be known. And accordingly, if D1 and D2 are negative, take the table value. If they are positive, take 1 minus table. So you get ND1 and D2, and then the formula is C0 is equal to S0 ND1 minus E by E power RT ND2. Put the values, get the answer. You got to match your answer with ICAI. Okay, please do match. So this is question number 3 of interest rate risk management. This is not a new sum. It is like a 8-year-old sum. It has already been done in class. Still, I would like to go through the same so that if there is a friction in your mind how to do two-party swap sum, that to currency, the friction goes away. Okay, so I'm just trying to overhedge myself and yourself by doing the sum. So A and B intend to borrow $2 lakh and $2 lakh in yen respectively. So respectively word means that A wants to borrow $2 lakh. So if you know how a swap works, A wants to borrow 2 lakhs means A will not borrow 2 lakhs dollars. B wants to borrow yen. Okay, that means B will not borrow yen, B will borrow dollars. So A will borrow yen, B will borrow dollars. Sure, 100%. For a time horizon of 1 year. The prevalent interest rates as follows. So we are given this interest rate table. You know what I do when the interest rate table is given to me. I prepare the table again. I underline what they want to do. So for example, in A, I will underline 9%. I will underline in B 8%. This is what they want to do. And then I will put a star on 5% and 10%. Correct? On 5%, 10%. So A should borrow yen. 2 lakh into 120 is the exchange rate, 240 lakh yen. And B should borrow 2 lakh dollars at 10%. So he'll borrow yen. A will borrow yen. 240 lakhs at 5%. B will borrow 2 lakh dollars at 10%. That's against their desire. Now I'm reading further. They entered into a currency swap in which it is agreed that B will pay A 1% over the yen loan rate which the latter is paying. So A is paying 5% on the yen loan. So B will pay to A how much? 6%. Correct? Whereas A will reimburse B to the extent of 9%. So A will pay B 9%. Perfect. Keeping the exchange rate invariant, quantify the opportunity gain or loss component of the ultimate outcome resulting from the designed currency swap. Okay, perfect. So if you look at this graph which is given to you, in this graph, A has borrowed 5% on 240 lakh yen he has to pay. B has borrowed 2 lakh dollars, he has to pay 10%, that's step 1. Now B is paying to A 5 plus 1, that is 6% on yen 240 lakhs, while A is paying to B 9% on dollars 10 lakh. Perfect. So effective cost of A comes to what? Effective cost of A comes to 8% on dollars 2 lakh, while effective cost of B comes to 7% on yen 240 lakhs. So if you look at the effective cost, 8% on dollars 2 lakh, whereas what was the underlined part of A would have borrowed dollar at 9%, but the effective cost is 8%. So how much is A gaining? 1% on dollars 2 lakh, that is $2,000. That's the answer. Now B, its effective cost is 7% on yen 240 lakhs, whereas what would have been its cost had B borrowed yen itself 8%. So instead of 8, 7%, 1% benefit. So 1% of yen 240 lakhs, that is yen 2,40,000, yen 2,40,000. So gain to A is dollars 2,000, gain to B is yen 2,40,000. Of course, you have to present it in the form that the institute presents. Okay, do follow the presentation of the institute. Thank you.
So we look at the sum, we are given the returns of portfolio A and the market portfolio for the last 12 months, Jan to December, and the standard deviation is given at the end. You are required to find out the monthly returns attributable to the sheer skill of the portfolio manager. So this should have been RP minus CML, but they have done RP minus SML. Even to do RP minus SML, we require beta. What is the formula for beta? R into sigma y by sigma x. So we require R because we already have sigma y 1.6223 and we already have sigma m, which is 0.9498. So we need the correlation. Second part, what part of the monthly return is attributable to the higher risk assumed by the fund manager? So that extra return is the unsystematic risk. So this should have been CML minus SML, but the institute has compared RM with RE. Assume that RF is 12% and the portfolio is fully diversified. So portfolio fully diversified means what? It means correlation is equal to 1. So the beta of the portfolio is 1.6223 divided by 0.9498 because correlation is 1. 1.6223 divided by 0.9498, which is coming to 1.708. That's the beta. I hope there is no confusion over there. They have computed the beta by some complication. Do not do the complication. Go to the original formula. Also the RF, which is 12%, is per annum. We'll make it monthly. That is 1%. So we'll take the RF as 1% in the sum. Okay, so you have everything, but they have solved it wrong. Let's look at the solution. So I'm going to the solution. So if you see the solution, the first table, they have computed the average return 2.1825. This is my RP. They have computed the market return 1.4558. This is nothing. This will be used in CML SML equation. So now they have copied the figure RP, RM, sigma P, sigma M, perfect. Since the portfolio is diversified, they should have taken R equal to 1 and computed beta. So whatever method they applied, the beta is 1.6223 by 0.9498. That is 1.708. That's fine. Now we go further down. Portfolio A is comparable to portfolio with the beta of this. Now they have done expected monthly return. They want to say required return as per SML is RF plus RM minus RF into beta. They got 1.7785. No complaints. Next, return due to net selectivity. RP minus required return as per SML. This is wrong because return due to net selectivity is RP minus CML. So this answer is wrong. Second part, return due to higher risk assumed by the portfolio manager. So they have done the RE as per SML minus the RM. RE minus RM. Now what is this formula? So you have to mug up the solution. If the sum comes again, just remember what to do in this same sum. But if a new sum comes, do the correct solution as indicated by me in the notes. Thank you. So let's come to arbitrage pricing theory, APT. You know APT is like CAPM, but it's not single factor, it's multiple factors. I think it's important for the exam. I've taken a question number 2. Look at the screen. Now this question was done in class, but I consider the question as important. So I've done it in class with you. I'm once again doing it over here. You can see that there are 2 factors over here, factor 1, factor 2, and they're given 2 stocks X and Y, and security Z, you find that the beta is 0,0. That means security Z is risk-free. So the 10% return given below security Z is actually RF. 10% security Z return is RF. And we are given security X is expected return 15%, security Y is expected return, that is 20%. So what is the equation of the APT? The equation of APT is ER is equal to RF plus FRP1 beta 1 plus FRP2 beta 2. That's the equation. Okay, now if we bring RF on the left hand side, it becomes ER minus RF, that is excess return, is equal to beta 1 FRP1, beta 2 FRP2. Okay, so we understand all this. Now let's look at the question. In fact, since I've spoken so much, I'll first of all attempt question number 3. Determine the expected return premium on factor 2. So we are supposed to find out FRP2. That we'll find by the simultaneous equation. You just look at the question. There's no need to look at the answer. So for security X, we have excess return 15 minus 10. Okay, 15 minus 10. That is 5 is equal to 0.75 FRP1 plus 0.6 FRP2. That's equation number 1. And for security Y, excess return is 20 minus 10. That is 10. So 10 is equal to 1.5 FRP1 plus 1.1 FRP2. Okay, now you solve simultaneously both the equations and you solve for FRP2. Whatever you get. Okay, I have a bad memory. I think FRP2 was 0. Let's check the answer. Whether FRP2 was 0. Third part. Once again, let me go to the answer. On solving, we get the lambda 1 to be 6.67, lambda 2 0. Yeah, FRP2 is 0. And they have calculated security X, security Y return. That's not required. The answer is FRP2 equal to 0. Okay, they've called it lambda 1, lambda 2. So FRP2 is equal to 0. Okay, let's go back to the question. So in the question, the first question, question number 1, analyze the sensitivity of Mr. Kapoor's portfolio. Sensitivity means beta of the portfolio with respect to 2 factors. Yeah, that means beta 1 and beta 2. If he has 1 lakh to invest, own funds 1 lakh, sells short 50,000 of Y and purchases 1,50,000 of X. So you will remember that in class I told you that weight is equal to what we have invested divided by own funds. So the weight of security X is 1,50,000 by 1 lakh, which is 1.5. The weight of security Y is minus 50,000 by 1 lakh, which is minus 0.5. Always check that the sum of weight should be equal to 1. So weight of X 1.5, weight of Y minus 0.5. And then you can calculate the weighted average, no? Which means the beta of the portfolio is equal to 1.5 into 1.5. Okay, 1.5 is what? 1.5 was the beta of, was the weight of X. So
the beta 1 is equal to 1.5 into 0.75 minus 0.5 into 1.5. Okay, 1.5 into 0.75 minus 0.5 into 1.5 okay, that's beta 1. And what is beta 2? 1.5 into 0.6 minus 0.5 into 1.1. Beta 2 is 1.5 into 0.6 minus 0.5 into 1.1. Let's check the answer. So in the answer they have given the same thing. Okay, the weights, first part 1.5 minus 0.5, and then they've calculated the answers are 0.375 and 0.35. Next, question number 2. Evaluate the sensitivity of the portfolio to the two factors if Mr. Kapoor borrows 1 lakh at RF and invest the amount he borrows along with his original amount of 1 lakh in security X and Y in the same proportion as described in part 1. So 1 lakh is own fund, 1 lakh is borrowed at RF, 2 lakh, and 2 lakh is invested in the same proportion as in part 1. So in the part 1 we had invested 1.5 times in security X, so 2 lakh into 1.5 is 3 lakh, so 3 lakh is invested in security X, and for security Y 2 lakh into minus 0.5, that is minus 1 lakh, so we are shorting Y to the extent of 1 lakh. So now we have total 3 lakhs, 1 lakh own fund, 1 lakh RF and 1 lakh security Y, and the entire 3 lakh is invested in what? Security X. Now what is the weight of security X? 3 lakh by 1 lakh. Amount invested by own funds, which is 3. What is the weight of security Y? Minus 1 lakh by 1 lakh, which is minus 1. And what is the weight of RF? Minus 1. So weight of X is 3, weight of Y is minus 1, weight of RF is minus 1. And you can once again do weighted average to find out beta 1 and beta 2. Okay. So since I had done the question in class, it would be easy for you to capture, but remember that the sum is important. Okay. Question number 2 on war. It's easier. In this case, we have only one stock. The amount invested in the stock, the market value is 1 crore. Okay, let me call it 100 lakhs, and the standard deviation is 2%. So first of all, you calculate standard deviation in rupee terms. So 2% of 100 lakh is what? 2 lakh. So 2 lakh is the standard deviation in rupee terms. Now you have to find out the 1 day war at 99% confidence. So the 1 day war is obviously the standard deviation that you have calculated, 2 lakhs multiplied by 2.33. Correct, that's the answer. Then you have to calculate the 10-day war. So the 10-day war is 1 day war into root over 10. The 10-day war is 1 day war into root over 10. Of course, all this is based on the assumption of normal distribution. And you can interpret the answer that this is the maximum possible loss with a 1% chance of being seeded. C Limited and D Limited are contemplating a merger deal in which C will acquire D Limited. The relevant information is as follows. So earnings are given 96 and 30. So 96 plus 30 is 126 post-merger earnings if earnings are not going to go up. Number of outstanding shares 20. We can't do 20 plus 14 because total number of shares are never added. They are 20 plus the number of shares issued to firm B. EPS 4.8, 2.143, P ratio, price by earnings 8 times, 7 times, market price 8 into 4.8, 38.47 into 2.14315. What is the maximum exchange ratio alpha acceptable to shareholders of C? C is the acquiring firm. If the P ratio of the combined firm would be 7 times. Okay, P ratio of the combined firm would be 7 times. So what's the maximum that A can pay to B? So please imagine that you are a shareholder of firm A. So you are holding one share which is worth PA. After merger, you will be holding one share. We are denoting it by PAB, post-merger share price. Obviously, you will gain if post-merger share price is greater than pre-merger share price. But when we talk about break-even, you want worst to worst the post-merger price to be equal to pre-merger price. So PAB equal to PA. PAB will be P ratio into EPS. And PA I think is given. What is the price of firm A? 38.4. It's 38.4. 38.4. P ratio is given after merger in the question 7 times. EPS will be 96 plus 30 divided by number of shares. I think, let me check. 20 plus 14 alpha. 20 plus 14 alpha. Solve for alpha. Okay, we just have to solve for alpha. It's a very, very simple solution. Don't expect me to solve it for you. I will not. Okay. So we get alpha this way. The process followed by the institute may be different. Doesn't matter. You'll get full marks. But if you want to follow the process by the institute, move ahead. You can do that. There is no issue. For example, 96 plus 30 combined earnings into 7. That shall be the value of the firm. From the value of the firm, you deduct the value of firm A, which is 8 into 96. Okay. So you deduct the value of firm A. You'll know how much we can pay to firm B, and that way you can do. The institute has done it like that. Second question. What is the minimum exchange ratio acceptable to shareholders of D if the P ratio of the combined firm will be 9 times? Okay, so firm B, if you are the shareholder of firm B, you are presently holding a share, firm B, okay, beta, minimum exchange ratio. So you are presently holding a share worth PB. After merger, you will hold not one share,
but beta shares. So the equivalent post-merger price for firm B is exchange ratio into the post-merger price of the combined entity. So beta into PAB equal to PB. Now the same stuff, beta into P ratio into EPS is equal to PB. What is the price of firm B? 15. It's given. 15. 15. So we get beta into 9. This time the P ratio is given 9. 90 plus 30, 96 plus 30 divided by 20 plus 14 beta is equal to 15. Solve for beta. Okay, I had done. Check your copy. 2 or 3 sums in your copy on this model on computation of alpha and beta if post-merger P ratio is given. So very, very straightforward. One would love it. Okay, if the question reappears in the exam. And if you can't solve basic algebra by moving right and left, in that case, nobody can help. Now ये जो सम है ऑटो कोरिलेशंस टेस्ट का, ये जो सम है ऑटो कोरिलेशंस टेस्ट का जो शायद नवंबर के एग्जाम में आया, ओके नवंबर के एग्जाम में आया, नवंबर 20 के एग्जाम में ये सम आया ऑटो कोरिलेशंस टेस्ट का, जिसमें मार्केट एफिशिएंसी चेक करना था वीक फॉर्म. Okay, according to the weak form of market efficiency, technical analysis should be redundant. यानी कि past prices के बीच में correlation नहीं होना चाहिए. ओके, पास्ट प्राइसेस के बीच में कोरिलेशन नहीं होना चाहिए, वरना लोग तो टेक्निकल एनालिसिस से कमा के निकल जाएंगे. तो अकॉर्डिंग टू वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी फर्स्ट फ्लोर, मार्केट इज कॉल्ड वीकली एफिशिएंट इफ यू कैन नॉट अर्न सुपर नॉर्मल रिटर्न कंसिस्टेंटली बाय लुकिंग एट द पास्ट प्राइसेस. सो टेक्निकल बिकम्स रिडंडेंट और यूजलेस. दैट वाज वीक फॉर्म. सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म था दैट पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन मैंने फंडामेंटल प्लस टेक्निकल बोथ बिकम यूजलेस. यू कैन नॉट अर्न सुपर नॉर्मल रिटर्न बाय लुकिंग एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एनुअल रिपोर्ट, पब्लिक इन्फॉर्मेशन, इकोनॉमी, इंडस्ट्री, कंपनी. और स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंसी का मतलब था मार्केट इज सो एफिशिएंट दैट यू कैन नॉट अर्न सुपर नॉर्मल रिटर्न इवन विद द हेल्प ऑफ प्रिविलेज्ड इनसाइडर इन्फॉर्मेशन. तो 3 फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी था. सर आप तीनों क्यों रिपीट कर रहे हैं जब ये वाला सम कर रहे हैं? तो बिकॉज मेरे को क्या पता क्या आएगा. रिवीजन का तो यही तरीका होता है, जब आप रिवाइज करते हैं घर पे तो मैं बार बार बोलता हूँ सम से रिवाइज कीजिए, और जब एक सम पकड़ते हैं तो उस सम से रिलेटेड जो दायां बायां एरिया उस चैप्टर में वो वाला एरिया भी कर लीजिए. इससे इतना ज्यादा एक्टिव रिवीजन होगा जिसका कोई लिमिट नहीं है. तो जो वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी है, वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी उसका जो टेस्ट क्लास में कराया गया था वीक फॉर्म का, वो टेस्ट था रन्स टेस्ट. N1 नंबर ऑफ प्लसेस, N2 नंबर ऑफ माइनसेस, R द नंबर ऑफ रन्स. सर क्या वो एग्जाम में आ सकता है? एकदम आ सकता है, 100%. कौन बोला कि जो एग्जाम में पेपर आएगा वो टफ वाला पेपर आएगा? इजी पेपर आ सकता है, पुराने सम्स रिपीटेड आ सकते हैं. तो कोई फालतू का चिल्ला चिल्ली नहीं करे कि सर आपने तो बोला टफ आएगा. मेरे को नहीं पता क्या आएगा. मैं तो हर तरह के पेपर के लिए प्रिपेयर होना चाह रहा हूं. मैं चाहता हूं मैं एक बार एग्जाम दूं, बार बार एग्जाम नहीं दूं. ठीक है, तो रन्स टेस्ट का सम आ सकता है. ठीक है, तो ये वाला सम ऑटो कोरिलेशन टेस्ट का है जो केवल एक बार आया है नवंबर 19 में. ओके, इसमें अपने को दिया हुआ है मिस्टर एक्स इज ऑफ द ओपिनियन दैट मार्केट हैज रिसेंटली शोन वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी. इन ऑर्डर टू टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ हिज इंप्रेशन ही हैज कलेक्टेड द फॉलोइंग डेटा रिलेटिंग टू द मूवमेंट ऑफ सेंसेक्स फॉर द लास्ट 20 डेज. तो 20 दिन का डेटा दिया हुआ है. क्या दिया हुआ है? ओपन हाई लो क्लोजिंग. ओपन हाई लो क्लोजिंग. अब बोला है लास्ट में टू टेस्ट द वीक एफिशिएंसी यूजिंग ऑटो कोरिलेशन टेस्ट टेकिंग टाइम लैग ऑफ 10 डेज. तो शुरू का जो 10 दिन है 1 से लेकर 10, उसका क्लोजिंग का चेंजेस निकालना है. ओपन हाई और लो कोई काम का नहीं है, केवल जो क्लोजिंग है उसका चेंज निकालना है, वो एक्स हो जाएगा. और जो 11 से लेके 20 है, 11 से लेके 20 है, उसका चेंजेस निकालना है क्लोजिंग का, वाई हो जाएगा. फिर से 1 से लेके 10 तक का चेंजेस जो है वो एक्स हो जाएगा, और 11 से लेके 20 का चेंजेस जो वाई हो जाएगा. मैं सोच रहा हूं कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जो अभी भी टेलीग्राम पे केवल टाइप करते जा रहे हैं, यानी कि सीए फाइनल में पहुंचने के बावजूद एक बार बोला हुआ समझ में नहीं आता है कि आप अभी ध्यान दीजिए जो हो रहा है, टेलीग्राम को मत यूज कीजिए. ठीक है, तो फिर भी आपका खुद का बुद्धि बहुत ज्यादा है, दैट्स ओके. तो 1 से लेके 10 तक क्लोजिंग प्राइस का चेंज 9 चेंजेस आएगा, और 11 से लेके 20 तक अब जिसने सम किया नहीं है वो क्या करेगा? एग्जाम में 1 से लेके 10 तक लेगा, फिर 10 से लेके 20 तक लेगा, 1 से लेके 10 लेगा, 10 से लेके 20 तक लेगा, 10 से लेके 20 तक उसका 10 चेंजेस आ जाएगा. वो देखेगा एक्स्ट्रा आ गया, अब क्या करूं? ये सब तकलीफें होंगी एग्जाम में, स्ट्रेस में. 1 से 10 का चेंजेस एक्स है और 11 से 20 का चेंजेस वाई है, और उन दोनों के बीच में कोरिलेशन निकालना है. उन दोनों के बीच में कोरिलेशन निकालना है. ठीक है, केवल क्लोजिंग प्राइस आएगा काम, ओपन हाई लो काम नहीं आएगा. अब कोरिलेशन निकालने का फॉर्मूला जो अपना क्लास में किया हुआ है, ओके, कोरिलेशन निकालने का फॉर्मूला जो अपना किया हुआ है क्लास में, वो है कॉब एक्स वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई. ये कोरिलेशन का फॉर्मूला है. इसको अगर तोड़ें तो फॉर्मूला इज समेशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट समेशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर इंटू समेशन
वाई माइनस वाई बार होल स्क्वायर। आप ये लगा सकते हैं डायरेक्टली चाहे तो, और या कोवेरियंस पहले निकाल लीजिए और सिग्मा एक्स निकाल लीजिए, सिग्मा वाई निकाल लीजिए, आपका मन। कोवेरियंस पहले निकाल लीजिए, फिर सिग्मा एक्स निकाल लीजिए, सिग्मा वाई निकाल लीजिए, और उसके बाद कोरिलेशन निकाल सकते हैं। इंस्टीट्यूट ने जहां से छापा है, इंस्टीट्यूट ने जहां से छापा है वहां पे कोरिलेशन का अलग फॉर्मूला दिया हुआ है। इंस्टीट्यूट ने जहां से क्वेश्चन और सॉल्यूशन छापा है वहां पे कोरिलेशन का अलग फॉर्मूला दिया हुआ है, पर आंसर मोरलेस सेम आएगा। तो नया फॉर्मूला नहीं यूज करना चाहिए, जो पुराना फॉर्मूला उसी से करना चाहिए। और किसी का मन है नहीं सर मैं तो इंस्टीट्यूट का ही छापूंगा, तो इन दैट केस वो नया वाला फॉर्मूला यूज कर सकता है। तो इफ यू लुक एट द सॉल्यूशन, इंस्टीट्यूट ने पहले 1 से लेके 10 का चेंजेस लिया, ये रहा 9 चेंजेस। फिर पीरियड 2 11 से लेके 20 उसका चेंजेस निकाला, 9 चेंजेस। तो ये जो चेंज दिख रहा है ये एक्स हो गया, ये जो चेंज है ये वाई हो गया, एक्स और वाई, और इसके बीच में कोरिलेशन निकालना था। मेहनत का काम है, अपने तरीके से करेंगे, अपने तरीके से जैसे अपने क्लास में करते हैं। तो इन दैट केस अपना कॉलम जो बनेगा वो कॉलम बनेगा एक्स का, वाई का, एक्स माइनस एक्स बार का, वाई माइनस वाई बार का, एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर का, वाई माइनस वाई बार होल स्क्वायर का, और एक कॉलम बनेगा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, ये कॉलम बनेगा। ठीक है, ये कॉलम बनेगा। तो आपका जो लास्ट कॉलम है उसका टोटल चाहिए आपको इसका टोटल चाहिए, इसका टोटल चाहिए। ठीक है, तो आप अगर डायरेक्टली फॉर्मूला लगाएंगे तो लास्ट कॉलम डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ दीज टू कॉलम्स, उससे कोरिलेशन आ जाएगा। कोरिलेशन राउंड अबाउट वही आएगा जो ICAI ने निकाला है। ठीक है, कोरिलेशन राउंड अबाउट वही आएगा जो ICAI ने निकाला है। ठीक है, तो इन दैट केस एक मिनट, ये राधा जो है उनको मैं डिलीट कर रहा हूं ग्रुप से, एक सेकेंड। राज खत्री को डिलीट कर रहा हूं ग्रुप से। जो लोग भी फालतू बातें कर रहे हैं उनको डिलीट कर रहा हूं ग्रुप से। एक मिनट ऊपर जाके सबको डिलीट कर देता हूं। हाँ, तो 3 जनों को मैंने डिलीट किया ग्रुप से। ओके, 3 लोगों को डिलीट किया मैंने ग्रुप से, बिकॉज वो लोग FSCM RM की बातें कर रहे हैं। उनको लग रहा है टाइम पास चल रहा है, अपने बैठे SFM के लिए वो लोग FSCM RM की बात कर रहे हैं, तो उनको मैंने ग्रुप से डिलीट किया है। तो इससे अपना कोरिलेशन निकलेगा। और इंस्टीट्यूट ने कैसे निकाला है? इंस्टीट्यूट ने A और B निकाला है। जो कैरेक्टरिस्टिक लाइन का A और B होता था ना, कैरेक्टरिस्टिक लाइन का जो A और B होता था, इंस्टीट्यूट ने वो निकाला है, A और B। तो इंस्टीट्यूट ने B निकाला है, A निकाला है, वो भी अलग फॉर्मूला से। और उसके बाद जाके उन्होंने R स्क्वायर निकाला है, A समेशन Y प्लस B समेशन XY माइनस N Y बार स्क्वायर डिवाइडेड बाई समेशन Y स्क्वायर माइनस N Y बार स्क्वायर, और उसके बाद स्क्वायर रूट लिया है तो कोरिलेशन आया। तो जो इंस्टीट्यूट को पूरा फॉलो करना चाहता है वो ये सब रट सकता है, पर ये सब नया नया रटने कोई सेंस नहीं है। कोरिलेशन ऐसे भी आपका करीब 0.41 आएगा, मैंने चेक कर दिया है, मैंने चेक कर लिया है। ओके, आई हैव ऑलरेडी चेक्ड, ओके आई हैव ऑलरेडी चेक्ड, कोरिलेशन 0.41 आएगा। ओके, कोरिलेशन जो है वो 0.41 आएगा, आई हैव चेक्ड। तो आप निकाल सकते हैं 0.41 का मतलब कोरिलेशन 0 नहीं है, कोरिलेशन 0 नहीं है, कोरिलेशन 0.41 आया, 0.41, दैट मीन्स कोरिलेशन इज नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स मार्केट is not weakly efficient. Market is not weakly efficient. Market is not weakly efficient. Okay, market is not weakly efficient. तो मार्केट वीकली एफिशिएंट नहीं है। अगर बाई चांस समझ लीजिए बैड लक, एग्जाम में आपका कोरिलेशन R इक्वल टू 0.21 आ गया, अगर कोरिलेशन इक्वल टू 0.21 आ गया, नेक्स्ट टाइम इस बार सपोज कि एग्जाम में सम आता है और कोरिलेशन 0.21 आ गया, तो कहीं पे लिखा हुआ नहीं है कि 0.21 को क्या माने। मैंने अपने एक्सपीरियंस के तौर पे बोला था आप लोग 0.25 तक को 0 मान लेना। मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोला था कि आप लोग, अब इनको भी हटा रहा हूं, मौलिक गर्ग को भी हटा रहा हूं, यस हटा दिया मौलिक गर्ग को। तो ये जो कोई भी दाया बायां बात करेगा उसको टेलीग्राम से हटा दिया जाएगा, बिकॉज मेरे को डिस्टर्बेंस होता है कोई और कमेंट्स देखने से। आप सम के बारे में बात कीजिए। कोरिलेशन 0.21, एफिशिएंट या इनएफिशिएंट क्या बोलेंगे आई डोंट नो, क्या ये 0 से अलग है या ये 0 है। मैंने जहां तक पढ़ा है बुक्स में जनरली इसको 0 मान लेते हैं और एफिशिएंट, बट तब भी डेंजर होगा, ठीक है, तब भी डेंजर होगा। हाँ, तो यश को भी हटा रहे हैं। सो कोरिलेशन 0.21 आए तो मेरा सुझाव होगा आप लिख के आइएगा, सिंस कोरिलेशन नॉट इक्वल टू 0, ओके, मार्केट इज नॉट एफिशिएंट इन द वीक फॉर्म, मार्केट इज नॉट एफिशिएंट इन द वीक फॉर्म।
इसी ग्रुप में लाइव चैट चल रहा है। लाइव चैट का मतलब क्या, मैं क्लास छोड़ के आपसे चैट करना चालू कर दूं क्या? एलेक्स आपको भी रिमूव कर रहे हैं। ओके, सो दिस वाज ऑटो कोरिलेशंस टेस्ट, दिस वाज ऑटो कोरिलेशंस टेस्ट, ये था ऑटो कोरिलेशंस टेस्ट, ठीक है। दिस वाज ऑटो कोरिलेशंस टेस्ट। इसमें कंफ्यूजन केवल क्या होगा, कंफ्यूजन केवल ये होगा कि सर इंस्टीट्यूट ने अलग फॉर्मूला से किया है, क्या हम लोग को वो अलग फॉर्मूला करने का जरूरत है? नो, आप अपने क्लास वाले फॉर्मूला से कर सकते हो अगर ये आ गया तो। कोरिलेशन एक्स और वाई के बीच में निकालना है। एक्स क्या होगा, चेंजेस फ्रॉम 1 to 10, वाई क्या होगा, चेंजेस फ्रॉम 11 to 20। तो इस सम के कॉन्टेक्स्ट में किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज पूछ लीजिए। तो एक स्टूडेंट बोल रहा है सर कोवेरियंस एक्स वाई डिवाइड बाय एन नहीं होगा क्या? वो तो मैंने बोल दिया ना, आपको अगर डिवाइड बाय एन करना है तो आप कोवेरियंस एक्स वाई पहले अलग से निकाल लीजिए ना। समेशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय एन निकाल लीजिए। सिग्मा एक्स पहले निकाल लीजिए, सिग्मा वाई निकाल लीजिए, फिर फॉर्मूला लगा दीजिए। वो ऊपर का एन और ये नीचे का एन और एन कट जाता है ना, इसलिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया था। ऊपर का एन और नीचे का एन कट जाता है, इसलिए मैंने ये लिख दिया था। मुकुल पूछ रहे अगर टाइम लैग 5 डेज आया तो, टाइम लैग अगर 5 डेज आया तो टोटल 10 डेज देगा। आपको 1 to 5 और 6 to 10 लेना पड़ेगा। अगर टाइम लैग 5 डेज आया तो आपको टोटल 10 डेज देगा, 1 to 5 और 6 to 10 लेना पड़ेगा। मुस्कान पूछ रहे आर नेगेटिव हुआ तो भी वही चीज़ है। अगर सपोज आर अपना आता -0.41, आर आता -0.41, तो इन दैट केस भी आर नॉट इक्वल टू 0, तो मार्केट इज नॉट एफिशिएंट। अगर आर इक्वल टू -0.41 आता तो भी मार्केट इज नॉट एफिशिएंट। हम हमेशा 20 डेज आएगा, ये हमेशा 20 डेज आएगा क्या? नहीं, 10 डेज भी आ सकता है, 10 डेज भी आ सकता है। 20 डेज क्यों आएगा? उनका जितना मन उतना आएगा। अपने डिस्कस कर रहे थे कि सर ये 3 तरह का मार्केट एफिशिएंसी होता है, वीक फॉर्म, सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म और स्ट्रॉन्ग फॉर्म। और जो वीक फॉर्म है उसका 2 टेस्ट है, एक है रन्स टेस्ट और एक है ऑटो कोरिलेशन टेस्ट। और अपने ऑटो कोरिलेशन टेस्ट में डिस्कस किए कि अगर अपने को 1 से लेके 10 दिन का प्राइस दिया रहे, केवल 10 दिन का। कौन सा प्राइस? क्लोजिंग प्राइस। ओपनिंग हाई लो काम का नहीं है, क्लोजिंग प्राइस दिया रहेगा। तो उस केस में जो फर्स्ट 5 डेज़ है, ये अपना लैग हो गया। फर्स्ट 5 डेज़ जो है उसका अपने चेंजेस निकालेंगे, वो x हो जाएगा। और जो नेक्स्ट 5 डेज़ है 6 to 10, उसका चेंजेस निकालेंगे, वो y हो जाएगा। तो x का आपके पास 4 वैल्यूज़ है, y का 4 वैल्यूज़ है। उसके बाद आप कॉलम बनाएंगे। आप कोवेरियंस चाहे तो निकाल लीजिएगा। कॉव एक्स वाई इज इक्वल टू समेशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय एन। एन क्या होगा? एन इज इक्वल टू 4। ओके, वैसे ही आप सिग्मा एक्स निकाल लीजिएगा, स्क्वायर रूट समेशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। एन माने क्या? 4। और सिग्मा वाई निकाल लीजिएगा, रूट ओवर समेशन वाई माइनस वाई बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, एन इक्वल टू 4। उसके बाद जो कोरिलेशन है वो कॉव एक्स वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। ये कोरिलेशन 0 आना चाहिए। अब 0 के आसपास अगर आता है तो उस केस में आसपास का डेफिनेशन कहीं दिया हुआ नहीं है। मैंने अपने नोट्स में लिखाया था 0.25 तक आए, +0.25 -0.25 के बीच में आए तो मान लेना 0 है, पर मैं श्योर नहीं हूँ इसके बारे में, ठीक है, बिकॉज कहीं पे इंस्टीट्यूट का लिखा हुआ नहीं है, तो आई डोंट नो क्या होगा। अच्छा हुआ 0.41 आया था, तो 0.41 आया तो डेफिनेटली नॉट इक्वल टू 0 है, तो मार्केट वीकली इनएफिशिएंट है। तो ये अपने डिस्कस किए। इंस्टीट्यूट ने आर का अलग फॉर्मूला यूज़ किया, उन्होंने पहले आर स्क्वायर निकाला फिर आर निकाला है। कोई ज़रूरत नहीं, आप सेम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। इसका जो दूसरा वैरायटी ऑफ सम आ सकता है, दूसरा वैरायटी आपको नोट करना चाहिए। दूसरा वैरायटी, वो दूसरा वैरायटी ऐसा आ सकता है कि से आपको जनवरी 2000 का प्राइसेस देगा और जनवरी 2001 का प्राइसेस देगा, जैन 2001 का प्राइसेस देगा, ठीक है। आपको प्राइसेस दिया हुआ है, क्लोजिंग प्राइस डे 1, डे 2, डे 3 और एक क्लोजिंग प्राइस दिया हुआ है।
तो आपको इसका चेंजेस को x और इसका चेंजेस को y मानना है। चेंजेस को प्राइस के बीच में कोरिलेशन मत निकाल दीजिएगा। तो दो अलग अलग पीरियड उसका प्राइस दिया हुआ है, आप चेंजेस फर्स्ट पीरियड में निकालिए, चेंजेस सेकंड पीरियड में। तो जब एक ही पीरियड दिया रहता है तब तो हम लोग को आधा आधा करके दो पीरियड बनाना पड़ता है ना, पर कभी कभी दो पीरियड दिया रहेगा तो फर्स्ट पीरियड का चेंजेस x हो गया, सेकंड पीरियड का चेंजेस y हो गया और उसके बीच में कोरिलेशन निकालना है। ठीक है, आई होप ये पूरा का पूरा क्लियर है। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, मैंने आराम से सारा बता दिया। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। तो कोई पूछ रहा था सेकंड वैरायटी ऑफ सम, सेकंड वैरायटी ऑफ सम ऐसा होगा कि दो अलग अलग पीरियड दिया रहेगा और पीरियड 1 का चेंजेस x, पीरियड 2 का चेंजेस y। और अपने जो सम की वो कैसा था, एक ही पीरियड दिया हुआ था 20 दिन का, उसको 10 दिन में बांटे। ठीक है ना, ओके, तो ये क्लियर है। तो दिस इज ऑटो कोरिलेशंस टेस्ट। इसके अलावा मैंने बताया सेमी स्ट्रॉन्ग का एक टेस्ट है जो अभी तक एग्जाम में नहीं आया हुआ, उसका नाम है रेसिडुअल एनालिसिस। और ये हर एक किताब में दिया हुआ है जिसमें ऑटो कोरिलेशन टेस्ट है। ओके, हर एक किताब में दिया हुआ है जिसमें ऑटो कोरिलेशन टेस्ट है। मैंने बता दिया ना प्रतीक कि मेरे को नहीं पता कट ऑफ क्या है, मेरे को रूल पता है कोरिलेशन 0 नहीं है तो मार्केट इनएफिशिएंट है। और मैं अपने एक्सपीरियंस से बताया 0.25 कट ऑफ मान सकते हैं, तो 0.34 इनएफिशिएंट होगा। ठीक है, तो प्रतीक पूछ रहा है इसका 0.34 आया तो वही 0.34 इनएफिशिएंट होना चाहिए। 0.25 के अंदर मैं एफिशिएंट मानता हूँ, बट बाद में आप मेरा कॉलर पकड़ोगे, आपने बोला था तो भाई मेरे को नहीं पता। आप इंस्टीट्यूट से आके पूछो कि वो लोग 0.18 को क्या मानेंगे, 0.21 को क्या मानेंगे, आई डोंट नो। ठीक है, मेरे ख्याल से 0.25 तक उसको एफिशिएंट मानना चाहिए। 0.25 से अधिक आए या -0.25 से भी कम आए, से -0.28, -0.3, -0.4, तो वो इनएफिशिएंट हुआ। सीरियल कोरिलेशन टेस्ट, ऑटो कोरिलेशन टेस्ट सेम होता है। सीरियल कोरिलेशन टेस्ट, ऑटो कोरिलेशन टेस्ट सेम होता है, बट सीरियल कोरिलेशन टेस्ट में परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालते हैं, तो और ज़्यादा बड़ा बांस होगा। सीरियल कोरिलेशन टेस्ट में चेंज नहीं, परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालते हैं। सीरियल कोरिलेशन टेस्ट, ऑटो कोरिलेशन टेस्ट सेम होता है, बट सीरियल कोरिलेशन टेस्ट में परसेंटेज चेंज इन शेयर प्राइस निकालते हैं। अब आप पूछेंगे सर उसके आने का कितना प्रॉबिलिटी है, मेरे को नहीं पता। ठीक है, मेरे ख्याल से अगर इन्होंने ऑटो दिया है तो ये लोग ऑटो ही देंगे। ठीक है, तो चेंज इन प्राइस से ही काम आएगा। मैं बोलूँ क्या आगे? प्रतीक का जवाब हो गया है, वरुण का जवाब हो गया है। अपना 1 घंटा होने को है क्लास में, तो शुड आई मूव अहेड? शुड आई मूव अहेड? यस, जैसा रिटर्न करते थे प्राइस का वैसा ही, तो आगे मूव कर रहा हूं। रेसिडुअल एनालिसिस में अपने को एक स्टॉक का कैरेक्टरिस्टिक लाइन दिया रहेगा, कैरेक्टरिस्टिक लाइन कि y हैट इज इक्वल टू 1.2 प्लस 1.5 इंटू एक्स। वाई हैट माने RJ हो गया और x माने क्या हो गया, RM। तो कैरेक्टरिस्टिक लाइन एक स्टॉक का दिया हुआ रहेगा और उसके बाद अपने को पीरियड दिया रहेगा, पीरियड, और उसके बाद मार्केट का रिटर्न और स्टॉक का रिटर्न। तो ये x हो गया, y हो गया। अपने y हैट निकालेंगे इक्वेशन से और फिर एरर टर्म निकालेंगे y माइनस वाई हैट, इसी को रेसिड्यू बोलते हैं। और इस एरर टर्म का टोटल 0 आना चाहिए, इस एरर टर्म का टोटल 0 आना चाहिए, तब सेमी स्ट्रॉन्ग एफिशिएंट है। ये भी कॉपी में करवाया हुआ है। ठीक है, ये भी कॉपी में करवाया हुआ है। हाँ, प्रैक्टिस नहीं कराया हुआ है, कोई चेप के प्रैक्टिस नहीं कराया, पर बताया हुआ है कि पीरियड, मार्केट का रिटर्न, स्टॉक का रिटर्न। आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना पड़ेगा वाई हैट A प्लस BX, और फिर एरर टर्म निकालेंगे, वो एरर टर्म रेसिड्यू है। तो सम टोटल ऑफ द रेसिड्यू शुड बी 0, यानी कि बाजार में जो रिटर्न है वो सिस्टमैटिक रिस्क के अनुसार मिल रहा है। ठीक है, तो ऑन एन एवरेज सिस्टमैटिक के अनुसार रिटर्न मिल रहा है, बाजार सेमी स्ट्रॉन्ग एफिशिएंट है। तो ये रेसिडुअल एनालिसिस होता है, ये आया हुआ नहीं है।